So good evening, everyone. Welcome to Q&A session. Myself, Dr. Tanima Singhal, and I welcome you all for this session, which I really hope that it is really informative for you all. So I'll try my best to answer your questions, which you have filled in the form. And today the session will end at 9 p.m. sharp because we have a webinar at 9 p.m. So please put your questions in the Q&A, chat box. I'll take the questions side by side. And also I'll keep taking the questions which you have already filled in the Google form, which was floated on the emails. So just let me see whether the chat is open for all of you. I hope the chat, yeah. So I see some hi and good evenings. So Renu, good evening. And Jigna, hi. So good to see you all here. So you can put your questions in the chat box. Hi Deepthi, hi Kajal, good evening. So you can put your questions here. I'll keep side by side, keep taking the questions. And I'll also start taking questions which are already in the Google form. Good evening, Anu. Good evening, Mayuri, Kajal. So hello, everyone. So because we have to end the session in 1 hour, so I'll try my best to answer as many questions as possible. So let's start the session now. So good that the questions have started coming in. Shweta says. So hi, Anu. So Shweta says, hello, ma'am. I am a new mom of 2 month, 20 days baby. I am facing low milk supply. Okay. So let's have this question because this is a very common question asked by mothers, low milk supply. I think all of you who are present here may be facing this issue of low milk supply. So that way it will answer many of your questions. So first of all, let's understand why is this issue coming of low milk supply? See, by nature will not make you milk deficient. Always remember, nature always gives you abundant milk to feed your child. But what happens is when your baby is born, for any reason, if the breastfeeding is not started at a right time, then or the baby is given some kind of formula milk or any other milk other than the mother's milk. So what happens? There is a gap when the body doesn't understand what is the demand of the child. And when it has produced surplus amount of milk, but it is not released from the body, it takes it as an extra milk and it starts reducing the milk supply. Okay, so this is called as a principle of demand and supply. So now if you are facing low milk supply, you have to reverse this process back. So you have to create demand on your body so that your brain understands that demand and starts making milk supply. Now, how to create that demand? To create that demand, we have three processes. First, either the baby should feed. Second, if the baby is not latching, many of you would be facing this issue that the baby is not latching on the breast. In that case, you have to either pump. This is the second thing. And third thing, if for any reason pumping is not possible, then you have to do hand expressions. So we have to follow a combination of all these three. The more, the better. If your baby is able to latch, but you are also still facing low milk supply, then directly feeding the baby, pumping and hand expression, all three has to be done. If your baby is not at all coming on the breast and your breast milk supply is very less, 10, 20, 30 or drops, then in that case, you have to right now focus on pumping to create that demand so that the milk supply comes in, then try to latch your baby. Now, many of you might be having this question also that may milk supply is increasing, or if it increased, will my baby come to the breast or not? Now here is, I have a lot of variations into this. I have one of my mother whose baby is 10-month old has also come on the breast back. So there are many success stories like this also where we have brought the babies from bottle to breast, exclusively breastfeeding from total bottle feeding. But yes, this can't be given a surety that every baby will come on the breast. See, because every baby is different, every mother is different. And when you all are coming to us, your babies are of different age groups.
I can give, or my team can give you tips and tricks of getting the baby on the breast with our experience of working with the mothers. But this also depends on how much efforts you're able to put in, because I understand you all are busy with your families, with taking care of the baby. Suppose you're a second time mom, you have an elder child to also take care. So there are a lot of issues with the mothers also, mother side also. So keeping in these things in mind, when you all people come to us, we plan out the consultations in a way so that it is most suitable for you. Got it? So low milk supply, when we talked about, is first of all is demand and supply. I hope this is very clear to you all that you have to create demand to increase your milk supply. This is part one. Number two part, you have to also work on your body's nutrition. If the milk supply had to come naturally, it would have come. If it dropped, that means we have to work something extra on your body to improve the nutrition wise or other things. So here are a few things. Listen very carefully. Number one is hydration. You should have good hydration. Drinking milk will not increase your milk supply. This is a myth. Basically, you should have good water intake. So having good hydration is number one point. Number two is the flow. If the baby is not coming on the breast, but the baby is habituated to the bottle, imagine one thing, the baby is getting easily milk with the bottle. It is easier for the baby to suckle from the bottle. So why will the baby come on the breast? So we have to make breast more more than the bottle itself. So here, if you can avoid the bottle, that will be the best part. But suppose your baby is 3 months, 2.5 months, and you are not able to avoid the bottle. In that case, you have to work on flow, improving the flow of the breast. So for improving the flow, you have to do oil massage and the warm compresses on the breast. This will improve the flow. Third part, mothers are most of the time they are stressed out. Oh, my milk is not coming. Oh, I am not a good mother. Oh, I don't have enough milk for my child. So first of all, you have to be calm and peaceful. This is very important. Always remember, girls, you have to attract positive. If you keep attracting negative, it will not help you. So you have to first attract positive. So lot of positive cuddles with your child, lot of skin to skin. Even if you are giving bottle feeds to your child, hold the baby close to you. Spend time with your child. When you are burping the child, hold the baby close to you. All these things you have to do to get why we have to do all these things. The scientific reason is when you are holding the baby close to you, there is a hormone called as relaxin hormone which releases in your body that naturally helps to increase the milk supply. So that's why you have to work on keep cuddles, a lot of positive cuddles with your baby and spending time with your child. Now, the last and the most important thing is how you will know that your milk supply is improving. How will you know how much, if the baby is coming on the breast, how much milk the baby is drinking? How will you know how to reduce the formula or to increase the formula? So for that, you have to check your baby's weight regularly. So if you track your baby's weight, if your baby's weight is increasing regularly and you are seeing that the formula milk is not increasing, that means there is some improvement in your milk. And always remember, please don't worry about the milk quantity. There is a factor also known as milk composition. So you don't need to work only on the milk quantity. I see mothers, they just worry, ma'am, I get milk only 10 ml, I get only 20 ml. Please don't worry. Even with 20 ml of breast milk with relactation mothers, I have seen formula milk coming down two bottles at a time with only 20 ml of breast milk in full day. So please don't doubt yourself, your body. You have to trust your body. If your body can nurture your child during pregnancy, it can even nurture now also. So you need to build that trust. And one more thing is there. So there are some nutrition points we can discuss about. So there are some galactogogues, the foods which improve the milk supply. Now there are so many home remedies around this. You would have already tried a lot of things. I know, I am very sure whoever is present today would have tried a lot of home remedies by yourself. So home remedies we know can help up to an extent, but not to a level of treatment when we are talking about. So for galactogogues, the galactogogues which me and my team recommend very well
are two main things. One is lactomagic powder and second is Morico tablets. Now, I can't tell any doses because I don't know your histories. So basically, lactomagic powder and Morico tablets is what we recommend to our mothers, and that has been giving results to us for last so many years of working with the mothers. So many times mothers ask us that, now why don't you prescribe some other things, any other thing? Because see, as a doctor, I want the best results for you. If I know that this particular medicine is giving results, why would I want to change it? And if you have come to me for results, then whatever I'm giving you, just trust on us and take that, because we want the best results for you. You have also come to us for the results. So basically, what we recommend is today very clear to you all. This is all about low milk supply. I hope this is very clear. Still, if you have any questions, you can put in the chat box. So I think, Shweta, this question answers this. This answers your question about low milk supply. Next is Vartika. 6 months बेबी है, लैच नहीं करता है और मिल्क की कुछ ही ड्रॉप आती हैं, रिलैक्टेशन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है वर्तिका। 6 मंथ्स के बेबी लैच नहीं करता है, मिल्क की ड्रॉप्स आती हैं। आप जब खुद बोल रहे हो 6 महीने का बच्चा अच्छा समझदार होता है। अब आपको अगर मिल्क सिर्फ ड्रॉप्स में आ रही हैं तो आपका बच्चा क्यों लैच करेगा? आप सोच के देखो, उसको तो दूध ज्यादा पीने की आदत है ना, तो आप उसको अगर ब्रेस्ट पे ले भी लोगे, किसी तरीके से हमने उसको लैच करा भी लिया, तो वो कितनी देर रुकेगा? रोने लगेगा, अगली बार वो नहीं आएगा ब्रेस्ट पे। तो आपको, आपके लिए स्पेशली जब आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप्स में है और आपका बच्चा 6 महीने का है, तो पहले हमें मिल्क सप्लाई को बढ़ाना होगा। उसके साथ में आप टिप्स एंड ट्रिक्स लोगे हाँ कि बच्चे को कैसे लैच कराएं। अब यहाँ पर आपका बेबी लैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन रिलैक्टेशन के केसेस में हमें हर मदर को बोलती हूँ कि सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, आपके बच्चे को आपका मिल्क मिलना हमारा पहला प्राइमरी गोल है, लैचिंग सेकेंडरी आता है। हमको ये कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे को माँ का दूध मिले, उसके लिए हमारी पहली मेहनत है। अब बच्चे को माँ का दूध मिलने लग जाएगा तो आपसे ज्यादा तो ग्रीडी मैं हूं, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा माँ पे लैच करे। तो मेरे जब भी मदर्स बताते हैं कि मेरा मिल्क सप्लाई इंप्रूव हो रहा है पंपिंग से एंड ऑल दैट, तो मैं ही उनको पुश करती हूँ कि अरे भाई बच्चे को ट्राई करो, थोड़ा हो सकता है आ जाए, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। तो इसलिए लैचिंग की बात कभी जब आप मुझसे या मेरे डॉक्टर से बात करते हो, तो आप ये मान के चलो कि मैंने उनको भी ऐसा ही ट्रेन किया है कि हर बच्चे को कोशिश करना कि वो माँ का डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करे। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट एंड फेथ के साथ आगे बढ़ना है कि हम ये नहीं, हम खुद भी नहीं चाह रहे, हमें पता है कि पंपिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर मिल्क बिल्कुल ड्रॉप्स में है और बच्चा बड़ा है आपका, तो आपको पहले पंपिंग से पहले मिल्क की सप्लाई पे वर्क करना ही होगा, तभी हम आगे लैचिंग पे काम कर सकते हैं। तो वर्तिका, आपका क्वेश्चन है कि हाँ रिलैक्टेशन बिल्कुल पॉसिबल है, और आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो आप YouTube पे जाइए, मेरा नाम सर्च करिए डॉक्टर तनिमा सिंघल, आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। वहां पे आप मॉमस्टार सीरीज के वीडियोस देखिए, उसके ऊपर रिलैक्टेशन के बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। 8 महीने के बच्चे के, एक 2 साल के बच्चे की मदर का रिलैक्टेशन सक्सेस स्टोरी है। तो वर्तिका आप उसको देखिए, आपको पूरा विश्वास होगा और पूरे अच्छे से बिल्कुल इस पे काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जिग्ना। मेरा बेबी 4 मंथ्स की हो गई है और फीडिंग पहले 1 मंथ तक आया, बाद में फुल स्टॉप हो गया, अब आ ही नहीं रहा है, सब ट्राई कर लिया, नो मिल्क सप्लाई। ठीक है, तो जिग्ना देखो 4 मंथ्स का बेबी हो गया है और मिल्क सप्लाई अगर इतना ड्रॉप हो गया है कि आ ही नहीं रहा है, तो जिग्ना बच्चा खाली इस तरह की इंफॉर्मेशन से कैसे काम चलेगा? खुद सोच के बताओ, मैं बता दूंगी, मैंने बताया भी, अभी लो मिल्क सप्लाई के लिए चीजें बताई भी हैं, लेकिन इसको करते करते 4 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब आपको तेजी से काम करना है जिससे बच्चे को आपका मिल्क जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो। तो जिग्ना, आपके लिए मैं कहूंगी कि अभी आप ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वेट ना करिए, टीम को फौरन रीच आउट करिए और अपना फटाफट कंसल्टेशन लगवाइए और फटाफट अपना इशू रिजॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। 4 महीने ऑलरेडी हो गए, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है वेट करने का। ठीक है जिग्ना, आपके लिए स्पेशली ये है कि मैं आपको वेट करने का नहीं बोलूंगी, आप कल ही टीम से बात करिए और अपना कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ लगवाइए। और फिर भी आपको ट्राई करना हो तो मैंने अभी मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको चीजें बताई हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मयूरी। मयूरी, if I am expressing milk in morning in one bowl kept in the fridge, can I add milk expressed in the afternoon in the same bowl? Yes Mayuri, you can do that, but just don't put that bowl in the freezer,
keep it in the refrigerator itself, and you can keep adding milk of 24 hours in the same bowl. You can definitely do that. And suppose you are not taking out that milk and that is an extra milk for you, then you can just label it with the date and you can keep it in the freezer at the end. So mothers, if your answers are getting resolved, please just say thanks, or means not thanks, at least that you got the answer, so that I feel okay that I'm putting in efforts and you are getting the answers for your questions, so that I feel good that at least you people are getting your answers. So next question is from Deepti. मेरा बेबी 2 months का है, क्या वो लैचिंग अभी भी सीख सकता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सीख सकता है दीप्ति। 2 महीने के बच्चे को सिखाना फिर भी आसान है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ, यूजुअली मैंने जो देखा है कि 3-4 महीने तक के बच्चों को हम लैचिंग फिर भी सिखा सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेरे पास एक बच्चा 1 महीने का था, जो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी, अरे 1 महीने का बच्चा है, इसको तो लैचिंग में सिखा ही लूंगी, मगर वो क्या बच्ची थी हमारी कि वो बिल्कुल लैच करने को तैयार नहीं थी। और वो कैसे लैच कर रही थी, एक बॉटल का जो निप्पल होता है वो मदर ब्रेस्ट पे लगा के लैच करती थी, उससे वो लैच कर ले रही थी। लेकिन डायरेक्टली लैच उस बच्ची ने नहीं करके दिया, हम लोगों ने सारा कर्म कर लिए उसके लिए, लेकिन वो लैच नहीं करी। तो मैं अभी ये बोलती हूँ कि हर बच्चा फर्क है, हर माँ फर्क है, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए इसके लिए कि आप एक बार कोशिश तो करिए। और दीप्ति, आपको ये भी देखना है कि अगर आपका 2 महीने का बच्चा है, आपका मिल्क सप्लाई कैसा है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क 3 बार से ज्यादा दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको मिल्क सप्लाई पे भी काम करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क पे है, आप एक्सप्रेस करके दे रहे हो, तो आप लैचिंग पे पूरा काम करो बिल्कुल। और अगर आप फॉर्मूला मिल्क 4-5 बार से ज्यादा दे रहे हो, तो आपको मिल्क सप्लाई और लैचिंग दोनों पे साथ में काम करना पड़ेगा। जिग्ना, मैं दोनों में आंसर कर रही हूँ। जो लोग मुझे क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे हैं, मैं उनको हिंदी में आंसर कर रही हूँ। द पीपल हु आर आस्किंग इन इंग्लिश, आई एम आंसरिंग इन इंग्लिश। Shweta says, yes, this happened to me due to C-section. Yes, I understand, Shweta, because after C-section, many babies are given formula milk in the NICU, and the mothers are not able to breastfeed their babies. काजल गुप्ता, मैम माय बेबी इज 6 months ओल्ड, वो ओनली फॉर्मूला मिल्क पे है बर्थ टाइम से ही, वो प्रॉपर लैच ही नहीं कर पाता। आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई रियली वांट कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग करूं बेबी को, प्लीज हेल्प। तो काजल, पहले हमको ये समझना है कि आपका मिल्क सप्लाई कैसा है। आपका बेबी अभी 6 महीने का तो हो गया है, वो फॉर्मूला पे बर्थ से है, तो आपने कभी पंप नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहली चीज तो आपका अगर बेबी लैच नहीं कर रहा था, तो आपको पंप करके मिल्क सप्लाई को आप बढ़ा सकते थे और ट्राई करते रहते। अगर मिल्क सप्लाई रहेगी तो बच्चे के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे ना मिल्क पे, ब्रेस्ट पे आने के। तो फिलहाल अभी क्योंकि आपका 6 महीने का बच्चा है और आप अगर इतने स्ट्रेस्ड हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी, जिनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, ये आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे वेट मत करो, प्लीज कल टीम को रीच आउट करके फटाफट अपना कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ लगवाओ। मेरी टीम बहुत अच्छे से ट्रेंड है, मेरे अंडर में वहां पे और डॉक्टर्स भी हैं मेरी टीम में, आप उनके साथ फटाफट लगवाओ अपने कंसल्टेशन और अपने इश्यूज को रिजॉल्व करो। और अगर आपको तब भी अपने आप भी करके देखना है, तो मैक्सिमम आप 4-5 दिन या 1 हफ्ता ट्राई करो अपने आप। अगर 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते रहने का कोई फायदा नहीं है। फटाफट एक्सपर्ट से राय लो और चीजें ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आईफोन, द नेम इज नॉट रिटन, इट इज कमिंग एज आईफोन। सो, hi, my 3 month old is completely on formula milk. I am taking medicines as suggested by Maa-Si Care from last 20 days and following the protocols. Still do have low milk supply and baby latch issues. Instead of pumping, I am doing hand expressions. I am really confused with the protocols shared. Okay, so have you put this question to the, so I have few questions for you. Thank you for giving this feedback. So first of all, answer me one thing. Have you put this question to the helpline team so that they can ask the concerned doctor? Second thing, we usually give one assessment call after once you have followed 7 days. So you have already followed for 20 days. Is your assessment call done? Please answer me these 2 questions, and also please give me your name because it is coming as iPhone. So please let me know what is your name and answer these 2 questions. Have you put your query for the helpline team that I am not able to understand the protocols? And second thing, is your assessment call done? Another question is from iPhone. I missed medicine for 1 day and suddenly milk supply is low. So basically, for 1 day,
usually it doesn't happen that way, but what happens when the milk supply is on a lower side and we are working on building up the supply, though that time the medicines are very, very helpful at that. So they are the pillars of working on the process which we are working upon. So for some mothers, it might be that one day of missing the medicines might be causing that kind of issue. But usually I have not seen that in one day of missing the medicines, the milk supply becomes suddenly drops down. So that thing we need to first of all understand. Next question is from Ishita. Hello, ma'am. What can I do to unclog my clogged nipple duct? So for a clogged duct, massage and the compress works wonders. So you have to do oil massage and then warm compress and regularly. And when if your baby is breastfeeding directly, when your baby is latching on the breast, take a comb which has got wider teeth. And when the baby is latching, suppose you have done massage, warm compress, and now you have to latch the baby. And that time just comb on the clogged duct. So that way, when the baby feeds, then the clog will be unclogged. Next question is from Mahejabeen Sheikh. Hello, ma'am. I am new mom of 1 month baby. I am facing low milk supply. Sorry, I missed this 10 minutes communication because my child is crying. I understand, Mahejabeen, but the same question I have to repeat. Sorry for that, dear. You will get the recording of this session tomorrow, or maybe by tomorrow you'll get it. So please look for that. I have answered a low milk supply in a very detailed way. If you have any specific question about low milk supply, then you can please just put it. Otherwise, just tomorrow watch the recording of this session. Next is from Anu Chetri. Ma'am, my son doesn't latch, but when I pump, I get very low milk. You have already answered about this, Anu. When you pump, you get very low milk. Then why your son will latch? How old is your son? So if the milk is very less, how can we expect our babies to latch in a very proper way? They also need milk. They are hungry. And when we are putting them on the breast and there is no milk, then how will they latch, Baba? Why do you expect your babies to behave in a way that just give them breast and they latch, cut, and drink properly? We have to work around them. They are also human beings. Come on. They're our babies. They're human beings and very smart. So they need milk. And when they know that they will get milk from the bottle, they will start that preference on the bottle. So we have to work on our supply, on our flow, and also on the latching techniques. These 3 things, when worked properly, will definitely improve your milk supply and will also let the baby come on the breast. Joanna Barveen says, please type the tablet and powder name to increase milk. So Lacto Magic and Morico tablets. Shweta Ahire, my milk supply is good for 5 to 10 minutes, then flow drops. Then my baby starts crying, so I need to give top milk. Very good question, Shweta. So milk is always in 2 parts, fore milk and hind milk. First, the fore milk comes in, which is transparent kind of a milk. And then the hind milk comes in, which is thicker in like more white, but on a darker side. So what happens when your baby is latching, as you say that for 5 to 10 minutes, the supply is good. That means that is because thinner milk, the baby is able to latch properly and get that. But when you say the drops, that means the hind milk, which is thicker, the baby takes more efforts to take in. That's why the baby becomes cranky. So this is a very clear indication that you have to work on the flow. Also, it means that your latching is not a deep latch. Your baby is doing a nipple feeding. That's why the baby is able to empty the fore milk. But for hind milk, the baby has to make more efforts, which makes him cry. So Shweta, you need to work on the flow. You need to also work on the latching. And if you're not giving any formula milk, that means your milk supply is good. But if you're giving formula milk more than 4 times, then you have to work on your supply also. Next is Vaishali. Hello, ma'am. My son is 3 months and 20 days old and is completely dependent on formula milk. And when I try to breastfeed him, then he starts crying and does not take the nipple in his mouth. So your baby is already 3.5 months old, Vaishali. Now, depending totally on formula milk, then that is a very clear indication that you are facing low milk supply. So I have just talked about it, that the babies who are habitual to the bottles or habitual to the taking the other than the breastfeed, if the milk supply is very less, we can't expect them to latch
on a low milk supply. First, we have to build around the milk. First, we have to work on the supply and the flow, and also keep trying to latch them, and then only we can expect them to come on the breast. We can't expect a child with a very low milk supply to latch on the breast properly when they're exposed to bottles and they know that the bottle is, the milk will come from the bottle. Your baby is already 3.5 months old, and babies by then are really smart enough to understand that they will get milk from the bottle. So for you, Vaishali, you have to work on the supply and flow first and then latch. वर्तिका सेज पंपिंग दिन में कितनी बार करना है मैम और हर बार कितनी देर तक के लिए? मैं जो यूजुअली रिकमेंड करती हूँ वर्तिका, मैं इस तरह से मानती हूँ कि अगर आपका बच्चा सपोज 8 फीड्स लेता है तो कम से कम आपको 8 से 9 डिमांड्स अपनी बॉडी पे करनी होंगी. अब आपका बच्चा अगर 3-4 बार सपोज लैच कर जाता है तो बचे हुए 3 से 4 बार आपको पंप करना है. तो क्योंकि मुझे आपका नहीं पता है कि आप कितनी बार डायरेक्ट फीड करा रहे हो, कितनी बार फॉर्मूला दे रहे हो, तो अगर मैं इसे पंपिंग के बारे में आप बात करो तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी आई मीन टू से फॉर्मूला नहीं लेता है, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा ना. पंपिंग आप पूछ रहे हो कितनी बार करना है, तो इसमें मैं ये बोलूंगी अगर सपोज आपका बच्चा बिल्कुल भी लैच नहीं करता है तो जितनी बार वो फीड्स लेता है आपको उतनी बार तो कम से कम लैच करना ही पड़ेगा. और अगर आपका बच्चा कुछ टाइम डायरेक्ट फीड कर लेता है तो बाकी बचे हुए टाइम पे आपको पंप करना पड़ेगा. अब कितनी देर करना है उसमें आपका 10 से 15 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, बट आपको ये पंपिंग की प्रॉपर टेक्निक्स पता होनी चाहिए एंड आपको मिल्क सप्लाई पे भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब पंप करते हो और मिल्क नहीं आता तो आप लोग को बहुत बुरा लगता है. किसी को भी लगेगा, मेहनत करोगे नहीं आता है तो बुरा लगता है, बट लेकिन हाँ ये है कि कंसिस्टेंटली अगर आप तीनों चीजों पे काम करोगे, सप्लाई पे, फ्लो पे और साथ में लैचिंग पे भी, तो आप ये चीजें इंप्रूव कर सकते हो. Kashmira says 1 month baby, lactation issue and low milk supply. So already Kashmira answered this question. If you have missed that, you can watch the recording tomorrow. You all will get the recording, so don't worry, you can watch the recording tomorrow. Next is Shelly. मेरा बेबी 2 महीने 20 डेज का है, वो लैच नहीं करता, फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंडेंट है और मिल्क ड्रॉप्स में आता है. तो शैली अगर मिल्क ड्रॉप्स में आ रहा है तो बच्चा अभी लैच नहीं करेगा. बच्चे को दूध चाहिए और उसको फॉर्मूला मिल्क, उसको बॉटल की आदत है. आपको पहले मिल्क सप्लाई पे वर्क करना होगा. अगर आपका मिल्क अभी ड्रॉप्स में आ रहा है तो पहले मिल्क सप्लाई पे वर्क करिए. बच्चा आपका 2.5 महीने का है, साथ साथ में आप लैचिंग पे वर्क कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप्स अगर मिल्क ब्रेस्ट से आ रहा है तो अभी ये बच्चा लैच करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको. तो पहले मिल्क सप्लाई पे वर्क करिए, मिल्क फ्लो पे वर्क करिए और साथ के साथ में आप लैच पे वर्क करिए, लेकिन अभी आपका मेन फोकस मिल्क सप्लाई और मिल्क फ्लो पे होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चांदनी शर्मा. 5 months बेबी है मेरा, मैंने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया था, घर के एल्डर ने बोला था कि तेरा मिल्क पूरा नहीं होगा, तुझे फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करना ही पड़ेगा. मैंने स्टार्ट किया. रीजन ये भी था कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी कम था. अब वो बॉटल फीड पर है, प्रॉपरली पंपिंग करके पिलाती हूँ उसको. अब मैं आपने मुझे इंक्रीज करना है अपना ब्रेस्ट मिल्क. 5 महीने का है बेबी. तो चांदनी अभी आप पंप करके तो बेबी को फीड करा ही रहे हो ना, तो आपको अभी भी फॉर्मूला मिल्क अगर देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली 5 महीने के बच्चे के लिए आप ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है आप ऑलरेडी पंप कर ही रहे हो इतने टाइम से, अगर उसके बाद भी आपका मिल्क कम पड़ रहा है तो इस समय मैं आपको बोलूंगी, देखो आप लोग के बच्चे जिनके 3 महीने से ऊपर के हैं, 3-4 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, अब आप फिर से ये टिप्स एंड ट्रिक्स लेने बैठोगे तो उसमें अगेन टाइम लगेगा. आपको अगर अपने आप ट्राई करना है तो मैक्सिमम 1 हफ्ता ट्राई करके देखो. अगर 1 हफ्ते में वर्क नहीं कर रहा तो फॉरन टीम को रीच आउट करो और अपनी कंसल्टेशन लगवाओ हमारे यहाँ से. डॉक्टर्स बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे. और स्पेशली बड़े बच्चे जिनके बच्चे ऑलरेडी 4-5-6 महीने के हो गए हैं, उनको तो मैं वेट करने के लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बात क्या है ना, आप लोग फिर 1 हफ्ता इसमें निकाल दोगे, फिर टाइम लगेगा, इसमें क्या फायदा होगा. ऑलरेडी आप अगर 4-5 महीने का बच्चे तो आप ऑलरेडी बहुत टाइम से ऑलरेडी बहुत चीजें ट्राई कर चुके हो. आई एम वेरी श्योर. ऐसा नहीं है कि आज आपने पहली बार कुछ देखा और पहली बार आप यहाँ आए हो. आपने ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई किया होगा. अगर उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है और यहाँ बैठे हो, इसका मतलब कि आपको हेल्प की जरूरत है, जो आपको सपोर्ट और गाइडेंस की है. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपके बच्चे बड़े हैं तो कि आप वेट करो. फिर भी आप करना चाहते हो तो 1 हफ्ता टाइम ले लो, अपने आप ट्राई करके देखो. नहीं काम चल रहा है तो प्लीज एक्सपर्ट गाइडेंस लो, फटाफट अपने इश्यूज को रिजॉल्व करो. आप हमारे पॉइंट से भी सोचो, आप जितना लेट आते हो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है आपको रिजल्ट्स देना.
जितने जल्दी आप आते हो तो उससे हमको भी रिजल्ट देना आपको ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट चांदनी, अचानक से डिक्रीज हुआ मेरा मिल्क। देखो अचानक से कुछ नहीं होता चांदनी, मुझे जो मेरा कहना है, अचानक से कैसे हो जाएगा? मिल्क प्रोडक्शन ऑलरेडी बॉडी में है, तो अचानक से कैसे ड्रॉप कर जाएगा? अनटिल अनलेस आपने कोई मेडिसिन लिया है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आपके घर में ऐसा कुछ हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, कुछ मे बी इस तरह की कंडीशंस हुई हो, तो मैं नहीं कह सकती। अदरवाइज अचानक से हार्मोन्स कैसे गिर जाएंगे बॉडी के अंदर? तो मैं क्या समझती हूँ, कई बार आप लोग ना अपने पर डाउट करने लग जाते हो कि आज दूध नहीं आ रहा, आज मिल्क नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। ठीक है, तो मैं चांदनी यही बोलूंगी कि अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे हुआ होगा, बट हाँ, अगर मिल्क कम है तो ऑब्वियसली उस पर वर्क करना ही है। मोनिका राज, मेरा बेबी 3 मंथ्स 15 डेज का है, वो वॉमिट करता है हमेशा। वॉमिट करता है, अगर अगर वो फॉर्मूला भी पी रहा है तो उसका मतलब उसको फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है। अगर वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे है और वॉमिटिंग कर रहा है, इसका मतलब आपके लैचिंग यानी कि शैलो है, वो एयर, दूध पीते समय बहुत एयर खींचता है, तो आपको लैचिंग पे काम करना है। अगर आपका बच्चा, आप पंप करके बॉटल से दूध दे रहे हो, तो आपको बॉटल थोड़ी प्रॉपर लेनी होगी, क्योंकि बच्चा आपका एयर बहुत खींच रहा है। तो अभी आपको जो 2-3 चीजें काम करना है, एक तो आप बच्चे को थोड़ा रेगुलरली बर्पिंग कराओ, मतलब डकार दिलाओ। दूसरा, अगर वो बॉटल से पीता है तो बॉटल प्रॉपरली होनी चाहिए, पूरा मुंह अच्छे से बंधा होना चाहिए उसका, जिससे उसको एयर ना जाए। और अगर बच्चा डायरेक्टली फीड करता है तो आपको लैचिंग पे इम्प्रूव करना है, जिससे उसको एयर सक ना करे वो। और अगर फॉर्मूला दे रहे हो आप, तो यानी इसको फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है। एक और चीज में भी बच्चे वॉमिटिंग करते हैं, अगर उनकी ओवर फीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आप उसका वेट चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा। दीप्ति सेज थैंक यू, गुड गुड, मोस्ट वेलकम। वर्तिका सेज थैंक यू मैम, थोड़ा सुकून मिला सुनकर कि बेबी को अपना मिल्क पिला सकते हैं। यस डेफिनेटली। सोनल सिंगल, मैम मेरा 3 मंथ्स का बेबी है और मेरा मिल्क सप्लाई बहुत कम है। लो मिल्क सप्लाई वालों के लिए मैंने शुरू में ही एक बहुत डिटेल में आंसर दिया है, कल प्लीज आप वॉच इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोग को। दीप्ति, मैम मेरा, और अगली बार से टाइम से आना तुम लोग, जिससे कि किसी का कुछ मिस ना हो। दीप्ति, मैम मेरा बेबी लैचिंग करना ही नहीं चाहता, पीछे मुंह कर लेता है, अब मेरा मिल्क ड्रॉप ड्रॉप आता है, सीरिंज से निकाल कर पिलाया है पहले, अब मिल्क बहुत कम हो गया है, प्लीज सजेस्ट। अरे भाई, तुम खुद ही बोल रही हो मिल्क ड्रॉप ड्रॉप आता है, और फिर बोलती हो बच्चा लैच ही नहीं करना चाहता। अरे ड्रॉप ड्रॉप वाले मिल्क पे बच्चा क्यों लैच करेगा भाई? उसको दूध चाहिए। अब ड्रॉप ड्रॉप आ रही है, वो इंतजार करेगा क्या? अरे इमेजिन करो, तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है और तुमको छोटे छोटे रोटी के टुकड़े दूर दूर से दिखाएं और फिर कहीं खाना है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा तुमको भाई? अब बच्चे को भूख लग रही है, उसको दूध चाहिए, उसको पता है कि बॉटल से दूध मिल जाएगा, तो वो क्यों ये करेगी भाई? क्यों वो करेगा? तो तुम लोग कहते हो बेबी लैच ही नहीं करना चाहता, वो मुंह उधर कर। पहले दूध तो बढ़ाओ भाई, तो पहले दूध बढ़ाना है। और तुम पहले भी बोल रही हो कि पहले भी सिरिंज से निकाल के पिलाया, तो इसका मतलब मिल्क हमेशा लोअर साइड में रहा है आपका। दीप्ति, पहले मिल्क सप्लाई पे वर्क करिए, जिससे कि बेबी को भी हम लैच बाद में करा सकें। तो मिल्क सप्लाई और मिल्क फ्लो पहले आपको उस पर वर्क करना है, फिर उसके बाद मिल्क फ्लो पे वर्क, लैचिंग पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इरफाना परवीन। हेलो मैम, माय सन इज 3 months 22 days old. He's completely dependent on formula milk. And when I try to breastfeed him, he starts crying. It does not take the nipple in his mouth. And my milk supply is also low. When I pump, I get only 30 ml. So see, Irfana, your baby is already 3.5 months old. In fact, more than that. And the baby is obviously by 3.5 months old, they understand the bottle very well. Now, you also said that my milk supply is low. So if your milk supply is low, please remember, baby will not cooperate in the beginning. So you have to work on the flow and the supply first on the primary basis. Then you can work on the latch also. So when we work with the mothers who have such kind of issues where low milk supply and latching issues, we give them some tips and tricks for latching, but we primarily focus on milk supply and milk flow. Once the milk supply and milk flow starts happening properly, then we start the latching, focusing more on the latching later on. So this is a process. You have to first work on building your milk supply, working on the flow, and side by side, not on a primary basis, start working on the latching. But right now, focus on milk supply and milk flow.
along with the latching, but later on, once the milk supply starts improving, then more focus on the latch. And when you're pumping, you're getting 30 ml. I don't think this is a bad one, but you're at least getting 30 ml. So you can just build on this and also try to latch the baby. Next question is from, so one question I'm seeing, yeah, iPhone, yes, I have. So what that does mean, I am not clear about it. So you can just let me know what is this, what is the meaning of yes, I have. Next question is from Preeti Singh. Ma'am, I am a mama of twin babies, 2 months and I have low milk supply. स्टार्टिंग में तो अच्छे से दोनों का को हम ब्रेस्ट फीड करवा रहे थे एंड फॉर्मूला तो बाय अब लो मिल्क सप्लाई हो गया है. सो देखो प्रीति, अगर अब फील हो रहा है 2 मंथ्स के बाद, तो इसका मतलब आपके दोनों बच्चे जिस तरह से बड़े हो रहे हैं और उनकी मिल्क डिमांड जितनी अब हो रही है, आपकी बॉडी उतना मिल्क अभी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है. तो यहाँ पर आपको तेजी से काम करना है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क अभी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा होगा. तो अब अभी आप इस चीज को ठीक कर लोगे तो अच्छा है. अभी 2 मंथ्स के बेबीज हैं, आप आराम से इस चीज पे वर्क कर सकते हो. तो लो मिल्क के लिए मैंने कई चीजें बताई हैं, बट मैं समझती हूँ कि ट्विंस के साथ ऑब्वियसली इट इज नॉट इजी कि अगर आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीजें ना हो. जैसे हम जब मदर्स को कंसल्टेशन देते हैं तो हम पॉइंटर्स देते हैं, ठक 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 7-8 पॉइंटर्स होते हैं. आपको पता है कि ये चीजें मुझे रोज करनी है. कई मदर्स उसके प्रिंट आउट्स निकाल के अपने उस पर लगा लेती हैं, जिससे कि इजीली सारी चीजें हैं. तो अगर आप ऑलरेडी इतने बिजी रहते हो बच्चों के साथ, अब आप खुद ट्राई करोगे तो चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं. आपको पता है कि ये 4 चीजें मुझे रोज करनी है और 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास वापस जाकर के उनको रिजल्ट्स बताने हैं. तो दैट उस तरह से आपके लिए चीजें ईजी हो जाती हैं. फिर भी अगर आप अपने लिए वर्क करना चाहते हो खुद, तो मैंने लो मिल्क सप्लाई के बारे में शुरू में ही बताया, कल रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया लो मिल्क सप्लाई के लिए. आप उसको देख करके वर्क कर सकते हो, लेकिन मैं 1 हफ्ते से ज्यादा आपको एडवाइस नहीं करूंगी अपने आप वर्क करने के लिए. अगर उससे रिजल्ट आपको नहीं दिख रहे हैं तो फौरन टीम को कॉन्टैक्ट करके आगे बढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम काजल गुप्ता. मैम, माई बेबी 6 months ओल्ड, वो ओनली फॉर्मूला मिल्क पे है बर्थ टाइम से, वो प्रॉपर लैच ही नहीं कर पाता, वेरी स्ट्रेस्ड. आई रियली वांट कि मैं ब्रेस्ट फीड कराऊं बेबी को, प्लीज हेल्प. ओके, हमने इसका आंसर किया था, फिर अभी आया यस मैम आई डिड पंपिंग टिल 2 months और बॉटल में बेबी इजीली पी लेता था, बट आफ्टर दैट मेरा मिल्क सप्लाई बहुत लेस हो गया. क्या होता है ना, पंपिंग हम लोग करके शुरू में मिल्क सप्लाई पूरी हो जाती है, पर बच्चा हमारे जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमें कुछ चीजों पे काम करना होता है. जैसे पंपिंग के ऊपर भी ना, देखो इतना आसान नहीं होता पंप करना, स्पेशली छोटा बच्चा है उसका भी ख्याल रखना है, घर भी देखना है, बहुत सारे काम होते हैं. तो कई बार हमारे पंपिंग सेशंस मिस होते जाते हैं. दूसरी चीज, हमारा कल्चर इस तरह से अलाइंड है कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो और बच्चा रोता है तो हर कोई ला करके बच्चे को माँ को दे देता है. लेकिन अगर आप एक पंपिंग मदर हो तो आपको कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता. हर किसी को लगता है पंपिंग ये क्यों कर रही हो. अगर बच्चा डायरेक्टली फीड नहीं कर रहा तो छोड़ो, उसको बॉटल पिलाओ. पंपिंग को तो लोग काउंट ही नहीं करते, उनके हिसाब से पंपिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो इसलिए अगर आप पंप पहले करते थे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका वो डिस्टर्ब हुआ होगा पंपिंग रूटीन, जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई ड्रॉप किया है. तो अभी आपको पहले अपने पंपिंग रूटीन को प्रॉपरली टाइम पे लाना है, सब चीजें प्रॉपर लानी है, प्लस आपको साथ में जैसे मैंने पानी और सब फ्लो वगैरह के बारे में शुरू में बताया, उसके ऊपर आपको वर्क करना है. मिल्क डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, iPhone is Anjali Rana. I have asked for protocol once again in helpline. However, I did not get it in detail. My name is Anjali Rana. I really want help from Maa-Si Care. Anjali, I'm noting your name and I'll make sure that the tomorrow helpline team calls you and will give you, definitely explain to you about all the protocols. Don't worry, Anjali. I'll just make sure that the team contacts you. Anjali Rana. Don't worry, Anjali. Just wait till tomorrow. I'll ask the team to contact you to explain the protocol. Okay? Happy? And you will definitely get help from us. Don't worry at all. प्रीति सिंह. प्रीति, मैंने आंसर कर तो दिया आपका बच्चा ट्विन बेबीज वाला. सोनम श्रीमल. Baby is latching on the left breast and not at all on the right breast, trying a lot. It's okay, Sonam. See, as you all know that the breast size is also not the same for every female. Same way, breast milk supply is also not the same
for all the mothers. So if you have difficulties for latching on one side, specifically on the baby is latching on the left breast. So I'll give you some tips. When you are trying to latch the baby, first of all, make sure that the baby is not very hungry. You have to latch the baby in mid-hunger cues. Then, at that time, you first put the baby on the right breast where the baby is not latching. First, try right. As the baby is not latching, shift him towards the left. But after feeding from the left, again try on the right. Please try to do that. The same concept. More demand, more supply. If you work on the left breast more like this, the milk supply will definitely increase. Also, the baby will be little habitual that side more. And then the the baby will also start latching Sonam. So you can definitely give this a try. I am very sure that it will work. Sayali Bhagat. I am mother of 4-month-old. My milk supply got low in the evening. Please tell me how to balance this. So evenings, usually the hormone prolactin is at the lowest level. That's why you face low milk specifically more in the evenings. So what you can do in the afternoons, try to have more cuddles with more skin to skin with your babies. Also, keep the baby skin to skin and also a lot of cuddling and the playing with the child. Afternoons is very important. And also remember, evenings babies usually do cluster feeding. So it might be looking for you that it is low milk supply in the evening. Usually it is not. Babies do cluster feeding in the evening, like they are asking for milk every half an hour, 45 minutes, which is very normal. So if this is happening, it is not a low milk supply. How you can check? You can check by baby's weight gain. If your baby is gaining constantly weight without any formula milk, then you don't have any low milk supply, Sayali. Okay? Sakshi, ma'am, my baby is 3 months old. She's very much dependent on formula. My milk supply is low. I feel that when I start pumping every time she feeds whole day and night, then my milk supply starts increasing. But as I live alone with baby, it's not possible in the night to pump. But when I stop pumping at night, my supply goes back again. And she again goes on formula completely. What should I do? It's a 1 week journey. So your baby is your baby is 3 months old, okay? And you also say that, is the baby feeding also? If your baby is directly feeding also, then don't pump. Every time your baby demands milk, you just put the baby on the breast. And if the baby is not satisfied, that time you can give little milk and again take the baby on the breast. So you can create demand with exclusive breastfeeding. You don't need to pump. Specifically for you, I'm answering where you say that it becomes too stressed out to pump and breastfeed. You can only focus on creating more demand by directly feeding your child frequently. Next from Mayuri Jadhav. Ma'am, after feeding baby, immediately baby spits out all milk sometime until the time breasts are not that heavy and baby gets fussy and refuse to latch again, but also wanted to latch. I am not able to understand that how fast again breast get full and his stomach is full or not. So after feeding, if the baby is spitting out, that is a very clear indication that either the baby is sucking air or the baby is already full. You didn't burp the baby in between. So here 2 tips for you. First of all, make sure that the baby is not sucking air during feeding. Second thing, if still the baby is spitting out, you just burp the baby in between. Just work on these 2 things and let me know by next week. Shweta says, yes, I'm giving more than 4 times of formula. Yeah, so you need to work on this. Kashmira, how much ml of milk does a 1-month baby needs at 1 feed? Good question. So you have to see one thing. Your baby should gain 150 to 200 grams per week. Now, since every child is different, so the amount of milk required by one child to increase 150 to 200 grams per week is different from the other baby who requires the how much amount to increase 150 to 200 grams. So you have to check for your child. You have to track for 1 week how much milk the baby has taken and how much is the weight gain. If the weight gain is 150 to 200 grams, that is the exact amount of milk which your child requires at this age. I hope that helps and it didn't confuse you much. Sudha, I am trying all the home remedies like oats, jeera, fenugreek and all. When I try these things, I am having full heavy breast, which is sufficient for whole day. But when I try those same again the next day, I am having very low 1-month baby. So trying new remedies when I don't have milk, I am giving formula.
Good question, Sudha. So that means you are working on different kind of remedies. You get results sometimes, but sometimes not. This is a clear indication that these home remedies are helpful in a way up to certain extent, but not at a constant phase, because there is no specific dosage for that. For home remedies, who told you any dosage? You are just doing it randomly with whatever things somebody would have told you. Somebody would have told you to take Zira or a joint. You're just taking randomly. So there is a proper dosage of galactogogues when we talk about. So when I talk about Lactomagic, when I talk about Morico tablets, there is a proper dosage. What I can recommend for you, if you want to try by yourself, you can take this Lactomagic and Morico twice in a day and try for it. If it works for you, it is very good. Otherwise, you can reach out to us and we'll give you a proper dosage of that. Next is Jigna. 4 months हो गया है तो अब मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो सकता है क्योंकि मेडिसिन पाउडर सब ट्राई कर लिया. तो जिग्ना आपने क्या क्या ट्राई किया मुझे वो बताओ भाई. 4 मंथ का है भाई. मैं तो यही मानती हूँ कि मिल्क सप्लाई इंप्रूव हो सकता है, मगर आपने क्या क्या ट्राई किया वो फिर मुझे बताओ तो मैं समझूं. Mayuri, when I try to deep latch baby, he starts action of vomiting or suffocation type phase. Don't understand how to work on deep latch. Even I am not able to hold breast to his mouth. My hand starts to pain. So if you're holding the breast like this, obviously it will start paining. So you have to hold the breast like this in U shape and keep the hand as close to your body as possible. And you can also keep a small stool sideways and you can rest your hand on that and hold the breast like this in U shape. So that will not bring pressure on your hand. This way you can work around it. Just a minute. Give me one. Next is Shilpa. My baby is 2 months old. He's not latching and milk supply is low. But I'm doing hand express from which I get 10 ml. So 10 ml is very less for a 2-month baby. Please work on supply and flow and then try for latching. Preeti. Preeti, I've already answered, Bacha. I've already answered for two twin babies. Watch this recording, Preeti. I've already answered this. iPhone, while pumping, if milk does not come, still do we have to pump? Yes. So during pumping, if the milk is not coming, that means it is not for getting the milk. See, we don't want milk with the pump if your baby is already latching. Why are we then advising pump? To create that extra demand for the brain to make more milk. Okay, so for breastfeeding mothers, why the pumps are advised? Not to collect the milk. It is to create that extra demand that Baba, tumhara kaam khatam nahi hua, we need more milk. Clear? Shilpa, he's totally on formula milk, but I daily try to make him latch. Good. I am taking Kato granule. Kaun sa Kato granule? What is Shilpa? Mayuri, when we are expressing milk, how much quantity we should express at each session? My baby is 6 weeks old. Hey, what is about the quantity? Whatever you get. Your baby is 6 weeks old. How much milk your baby is requiring per feed? So there is no, this is not a machine that you can pump 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml. It's not like that. So first see how much milk you are able to collect in 24 hours. What is the requirement of your child? And what is the weight gain in 1 week? If the weight gain is 150 to 200 grams and whatever amount of milk you are producing is perfect, you need to just track the baby's weight for knowing your milk supply. It is like correct or not. शैली मैम रिलैक्टेशन पॉसिबल है 2 months 10 days के बाद और कितना टाइम लगेगा? हाँ भाई 2 months 10 days 20 days के बेबी के लिए तो सोचना भी नहीं है आपको. रिलैक्टेशन के लिए 100% हो जाएगा. कितना टाइम लगेगा ये हमें पहले देखना होगा. उसका पूरा टोटल लाइक अभी उसका कितना मिल्क इनटेक है, आपकी लास्ट ब्रेस्ट फीडिंग कब हुई थी, आपको ये लो मिल्क सप्लाई या रिलैक्टेशन तक क्यों आना पड़ा 2.5 महीने के अंदर ही, आपका स्टार्टिंग कैसे रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग कितने दिन हो पाई थी, क्या हुआ था शुरू में कि जो मिल्क इतना ड्रॉप कर गया. पहले ये क्वेश्चंस हमें समझने होंगे आपको. उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे. 1 हफ्ता फॉलो करने के बाद आप वापस आओगे. उन रिजल्ट्स को देख करके हम आपको बेटर बता पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा. Bakya, relactation possible after 1 year? Yes. So I have worked for relactation for a baby, 2 years baby's mother also. So yes, for me till 2 years, everything is possible. Gayatri, ma'am, my baby is 5 months old now. From 2 months, she is not latching directly on my breast. How to get her back to the breast? I'm exclusively feeding her pumped breast milk. So 5 months old, you are now from 2 months, she's not coming on the breast. So here, what I would suggest,
every time you're like lot of cuddling and playing with your child, when you're giving bottle to the child, when the baby has taken half of the bottle, remove the bottle and try to take the baby on the breast. Also, when the baby is little sleepy and when the baby is very good mood, that time you try. All these tips you try and then let me know by next week. Girls, I need to wind up this session. I know there are still 10 minutes left, but हेलो there are मैम. few things. मैम मैम मुझे मेरा क्वेरी मैम मैंने अभी ऐड हुई मैम. मैम मैं क्या कौन है ये? क्वेश्चन कर सकती हूँ? मैम विभा नाम है मेरा. हम्म मैम मेरी बेबी है मैम 2 मंथ्स ओल्ड है. तो वो पाँच. वेट आप अपना क्वेश्चन उसमें डालिए, क्योंकि इतने सारे मदर्स है, मैं आपका क्वेश्चन सीधे ले लूंगी तो बेचारे वो कहेंगे मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, हमको नहीं मैम ने लिया, मैम ने किसी को नए को ले लिया। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आंसर करती हूँ। मैम मैम एक मैम अगर हो पाए पॉसिबल हो पाए तो मैम. मैम प्लीज. मैम. मैम प्लीज. मैम बोलिए। मेरी ना 2 मंथ्स ओल्ड बेबी है मैम. तो शुरू में मैम 5 दिन ये नर्सरी में रही थी. उसके बाद मैम बहुत सारी मतलब ये लैच नहीं कर रही थी मैम मेरा जो ब्रेस्ट फीड है. अभी लास्ट 20 डेज से ये लैच कर रही है मैम. ठीक है. बट हो क्या रहा था, मुझे कुछ हेल्थ इशू थे ना, तो इसको क्या रात में कोई और अपने पास सुलाता था, तो उस टाइम इसको बॉटल का फीड अपन देते थे. ठीक है. अब हो क्या रहा है मैम, पूरे दिन तो ये मेरे से ब्रेस्ट फीड करके ये फीड ले लेती है. बट नाइट टाइम ना मैम ये इसका पेट नहीं भरता मेरे ब्रेस्ट फीड से. ठीक है, देखो रात के टाइम पे आप उसको ये करो कि जब आप उसको बॉटल देते हो तो पूरी जी. बॉटल पूरा एक बार में मत दो। सपोज वो जी. 60 ml अगर पीती है तो 30 ml देने के बाद ब्रेस्ट पे लेने का ट्राई करो। ऐसा आप कुछ टाइम तक करो, क्योंकि बच्चा दिन में फीड ऑलरेडी कर रहा है। तो रात जी. में ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेस्ट फीड करना नहीं आता। ठीक है। जी. रात में वो नींद में रहती होगी, उसको फ्लो मिल रहा है तो वो पीती रहती होगी। तो यहाँ पे आप क्या करो कि 30 ml जो भी देते हो आप उसका आधा दे करके फिर ब्रेस्ट पे ट्राई करो। ये करो आप, हाँ. उसके बाद फिर मुझे बताओ कि कैसा है। अच्छा मैम, ये जो बच्चे जो रात में सोते नहीं है मैम, ये कब से सोना शुरू करते हैं मैम? यूजुअली 3 साढ़े 3 महीने के बाद से बच्चों का थोड़ा नाइट में सोना बेटर हो जाता है। आपका बच्चा अभी कितना बड़ा है? मैम 2 मंथ्स ओल्ड है मैम. तो अभी 1 महीना एक महीना कर होने थोड़ा वाला है बोलो। ना. अच्छा यूजुअली अच्छा तीन साढ़े अच्छा. तीन महीने के बाद से बच्चे थोड़ा रात में प्रॉपरली सोने लग जाते हैं। और मैम इस ये जो जैसे दिन में मैम पूरा ब्रेस्ट फीड पे ये रह रही है, तो इसका पेट तो भर रहा होगा ना मैम, अगर ये रो उसका नहीं रही है वेट तो? देखो, उसका वेट देखो, अच्छा. एक हफ्ते में उसका वजन अगर 150 से 200 ग्राम बढ़ रहा है तो वो ठीक है ओवरऑल। अच्छा अच्छा. अब मैम जैसे ये नहीं रो रही है तो ये मैम उसका पेट तो भर रहा होगा? डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि कई बच्चे बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, वो नहीं रोते। जी. तो आपको इसलिए अच्छा बच्चे का वजन चेक करना है। अच्छा. अच्छा ठीक है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. So girls, I'm very sorry. I have to leave today at 5 minutes little early because we have a webinar today at 9 p.m. where we are going to talk about a relactation webinar. So we are starting a 8 weeks program where me and Dr. Akansha will be there to help the mothers. It is a cohort program where we are having a group sessions. It will be continuing for 8 weeks. It's a 8 week program. So we are launching that webinar. We have previously done for 15 weeks. Like 15 weeks we did that webinar and was very good results, but in between I had to go like I had to join some things, a lot of things were there, so we stopped in between. We are again starting it. So today we have a webinar at 9 p.m. So sorry for that I am not able to continue with the questions, but I promise that from next time I'll ask my this person to start the session at around 7:30 so that I can give around 1.5 to all of you to answer your questions. I'm very sorry that I'm not able to continue complete all the questions, but it's a promise that I'll definitely come next week and will answer all your questions and will try to start the session at 7:30 itself. And just wish me best of luck that I can help more mothers into all this. And today is our launch webinar again for this 8 weeks program. So just wish us luck so that we can get a lot of mothers helping it out. Thank you so much. Take care, girls. And see you definitely next Friday again. We'll try for 7:30, or just can you put in the chat box fast? Should I change the day? Maybe some Tuesday or Wednesday and Friday. So because at 9 p.m. every Friday will be a webinar. So what do you suggest? Should I put some other days? I'll take a poll, fast poll. Or you can just put in the chat box because these technical things, poll. I don't know where's the poll. Just put in the chat box. Do you want me to change the time? Like day, so I can
do the session from next time on any other day, maybe Tuesday or Wednesday, whatever is good. So I'm getting yeses. So let's take a poll on the mail. We'll send you a poll there that which day would you prefer, so that we can have good sufficient time. Saturday or Sunday? Oh, Saturday, Sunday. Are you all okay? Sunday is okay for you all? Just tell me about Sunday. Just put our hands up if Sunday is good for you all. I'll just answer you all. You can unmute yourself and just let me Sunday okay with all of you. Oh, yes, I'm getting good yeses. Sunday. Oh, that's good. So we can start plan out the sessions. Kaun bola? 3 point Sunday. Sunday is good? Good. So I will just send the message. So Sunday I'm all free. I can give a lot of time for all of you. So we'll try for that. Chalo, take care, girls. Bye-bye, and take very good care of yours. Bye-bye.